नमस्ते खुसरो बटिया। पिछली स्लाइडों में अपन ने डायरिया के बारे में डिस्कस किया था। इसके 2-3 स्लाइडों सेशन बनाए थे। आज उसका लास्ट सेशन है। इसको डायरियल पार्ट 3 के अंदर बचा कुचा पोर्शन अपन डिस्कस करेंगे। तो नाउ फोकस ऑन स्लाइड। इससे पहले ओआरएस थेरेपी के बारे में पता था अपन ने। अब अपन पढ़ेंगे इंट्रावेनस डिहाइड्रेशन। तो इंट्रावेनस डिहाइड्रेशन, intravenous infusion is usually required only of the initial dehydration of severely dehydrated patients who are in shock or unable to drink. Such patients are best transferred to the nearest hospital or treatment center. The solution recommended by WHO for intravenous infusion are पहला इसमें रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, जिसको आरएलवी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड हार्टमैन सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है कि हार्टमैन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन को। इट इज द बेस्ट कॉमर्शियली अवेलेबल सॉल्यूशन। इट्स सप्लाई एडुकेट concentration of sodium and potassium and the lactate yield bicarbonate or correlation of the acidosis. It can be used to correct dehydration due to acute diarrhea of all causes. दूसरा इसमें डायरिया ट्रीटमेंट सॉल्यूशन, also recommended by WHO as an ideal polyelectrolyte solution for intravenous infusion. It contains in 1 liter sodium chloride, 4 gram sodium acetate, 6.5 gram potassium chloride and 1 gram and glucose 10 gram. It must meet purity and sterility requirement of fluid for injection. If nothing else is available, normal saline can be given. Because it is often readily available, normal saline is the poorest fluid because it will not correct the acidosis and will not replace potassium losses. It should be replaced by the above solution as early as possible. Plain glucose and dextrose solutions should not be used as they provide only water and glucose. The recommended dose of the IV fluid to be given is 100 ml per kg. Infant under 12 years, first give 30 ml per kg 1 hour, then give 70 ml per kg 5 hour. और इन्फेंट के लिए जो 12 महीने तक के हैं, 1 साल तक के बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं, तो उन्हें फर्स्ट पहले घंटे 30 ml पर केजी जितना वेट है उस हिसाब से मात्रा देनी है, और फिर 70 ml पर केजी क्या हुआ अगले 5 घंटे के लिए। ओल्डर है तो 30 ml पर केजी 30 मिनट एंड देन गिव 70 ml पर केजी 2.5 hour. The initial dehydration should be fast until as easily palpable pulse is present. Resist the patient every 1-2 hours. If dehydration is not improving, given the IV drip more rapidly. The use of large bore needle number 18 will permit rapid infusion. After infusing 1-2 liter of fluid, dehydration should be carried out at somewhat slower rate until pulse and blood pressure return to normal. When the patient can be drink the oral food, give ORS about 5 ml per kg hour. The patient must be examined at interval during dehydration. After 4-6 hours of satisfactory treatment, all signs of dehydration should be disappeared except that the urine flow may not have yet started. Sometimes, if too much dehydration fluid is given, the eyelids become puffy. If this occurs, IV fluid should be stopped. It is most helpful to examine skin elasticity and pulse strength. Both of which should be normal.
Dehydration must continue until all signs of dehydration have disappeared. Second है इसमें maintenance therapy. After the initial food electrolyte deficit has been corrected, example, the all sign of dehydration have gone, oral food should be used for maintenance therapy in adult or older children. Thus is not adequate guide of fluid needs. They can be told to drink as much they want to satisfy other thirst. The guidelines of maintenance therapy are given. इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ डायरिया एक तरफ, अमाउंट ऑफ ओरल फ्लूइड. तो माइल्ड डायरिया है नॉट मोर देन 1 स्टूल एवरी 2 आवर और लॉन्गर और लेस देन 5 ml पर स्टूल पर केजी पर आवर है. तो 100 ml पर केजी फूड बॉडी वेट per day until diarrhea stop. और सीवियर डायरिया है यानी मात्रा उसकी मोर देन 1 स्टूल एवरी 2 आवर. तो रिप्लेस स्टूल लॉसेस वॉल्यूम फॉर वॉल्यूम इफ नॉट मेजरेबल गिव 10 to 15 ml per kg body weight per hour. The general principle is that the oral fluid intake should equal the rate of continuous stool losses, which should be measured diarrhea usually last 1 or 2 days. थर्ड है इसमें appropriate feeding. Medical profession has relayed the centuries under the mistaken assumption that it is important to rest the gut during diarrhea. The current view is that during episode of diarrhea, normal food intake should be promoted as soon as the child, whatever its age, is able to eat. This is especially relevant for the exclusively breastfed infant, newborn infant with diarrhea who show little or no sign of dehydration can be treated by breastfeeding alone. Those with moderate or severe dehydration should receive oral dehydration solution. Breastfeeding is continued along with oral rehydration solution given after each liquid stool. Not only breast milk help the infant to recover from an attack of diarrhea, both is termed to be nutrient its supplies and its dehydrating effect, but it helps to prevent further infection because it is protective properties. Fourth is chemotherapy. Unnecessary prescription and of antibiotic of all other drugs will do more harm than good in the treatment of diarrhea. Antibiotics should be considered where the cause of diarrhea have been clearly identified as Shigella, typhoid और cholera. तीनों की वजह से हो तो ही एंटीबायोटिक देनी है यानी कि मेडिसिन देनी है, बकायदा नहीं ओआरएस और इंट्रावेनस फ्लूइड से ही ट्रीटमेंट करना है. The symptomatic different diagnosis of Shigella and cholera. ये Shigella और cholera का differential diagnosis है. ये डायरिया के सिम्टम एक्यूट बैटरी डायरिया का कोलेरा में, उसमें एक्यूट ब्लडी डायरिया का Shigella में. फीवर नो, इसमें फीवर रहेगा. एब्डोमिनल क्रम्स इसमें रहेंगे, इसमें भी रहेंगे. वॉमिटिंग इसमें होंगी कोलेरा में, इसमें Shigella में नहीं होंगी. याद रखना है. रेक्टल पेन इसमें नहीं होगा और इसमें होगा. स्टूल 3 से अधिक स्टूल पर डे, वाटरी लाइक राइस वाटर 3 स्टूल पर डे विथ ब्लड और पस. ब्लड और पस किस में निकलेगा? Shigella में. कोलेरा वाटर डिस्चार्ज निकलता है. Diarrhea due to cholera, the during choice of doxycycline, tetracycline, TMPS max and erythromycin. For diarrhea due to Shigella, drug of choice consists ciprofloxacin, as Shigella is usually resistant to ampicillin and TMX SMX. The medicines that should not be used in treatment of diarrhea are as follow. Neomycin use नहीं करनी है. Damage the intestinal mucosa and can cause माल absorption. प्रोगेटिव नहीं देने हैं. मोशन डायरिया एंड डिहाइड्रेशन हो जाएगा. और टिंचर ऑफ ओपियम और एट्रोपिन नहीं देने. डेंजरस फॉर चाइल्ड एंड डिसेंट्री पेशेंट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम. कार्डियोटोनिक सच एज कोरामाइन नहीं देनी है. शॉक इन डायरिया मस्ट बी करेक्ट बाय इंट्रावेनस फ्लूइड एंड नॉट बाय ड्रग. स्टेरॉइड नहीं देने, एक्सपेंसिव, यूजलेस हैं, मे बी एडवर्स इफेक्ट. ऑक्सीजन एक्सपेंसिव, अननेसेसरी. चारकोल नहीं देना. कोलालिन, पेप्टिन एंड बिस्मथ
or Maxaform, no value, it can be dangerous. Zinc supplement, when a zinc supplement is given during the episode acute diarrhea, it reduces the episode duration of severity. In addition, zinc supplement given to 10 to 14 days lower in incidence of diarrhea in following 2 to 3 months. WHO and UNICEF therefore recommended daily 10 mg of zinc for infant under 6 months of age and 20 mg of children older than 6 months for 10 to 14 days. तो जिंक सप्लीमेंट का भी ध्यान रखना है, ये देने हैं। बेटर दूसरा था इसमें बेटर एमसीएच प्रॉपर्टीज, लॉन्ग टर्म थीम्स में पहला मैटरनल न्यूट्रिशन, पहले मैटरनल न्यूट्रिशन सुधारेंगे जब भी वो अच्छी प्रॉपर्टी बनेगी एमसीएच प्रोग्राम की। improving perinatal nutrition will reduce the low birth weight problem. Perinatal and postnatal nutrition will improve the quality of breast milk. दूसरा इसमें चाइल्ड न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन में पहला है प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। The breastfed child it has very much less risk of severe diarrhea and death than the bottle-fed child. Promotion of breastfeeding should be include strong effort to limit the use of commercial and artificial formulas. Breastfeeding should be continued as long as possible. Appropriate being practice, poor being practice are a major risk factor of diarrhea. The child should be weaned neither too soon or too late. In any case, not earlier than the 6 months of use, life using nutrients and locally available food, and the food should be hygienically prepared and given. Supplementary feeding, this is necessary to improve the nutrition status of children aged 6 to 59 months, as well as soon as supplementary food is introduced, that child entered to high risk category. और विटामिन सप्लीमेंटेशन, ये सारे क्या है चाइल्ड न्यूट्रिशन को सुधारने वाली चीजें हैं। तो विटामिन सप्लीमेंट इज ए क्रिटिकल प्रिवेंटिव मेजर एंड स्टडीज हैव शो मोर्टेलिटी रिडक्शन ranging from 19% of 54% in children receiving supplement. The reduction is associated in large part with decline in death due to diarrheal disease and measles. It also reduces the duration, severity and complications associated with diarrhea. प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी क्या है? सैनिटेशन, सैनिटेशन व्यवस्था तो देखनी है। इमीडिएटली रिड्यूस ट्रांसमिशन, एम्फसाइज द ट्रेडिशनल, इम्प्रूव वाटर सप्लाई, इम्प्रूव एक्सक्रेटर डिस्पोजल एंड इम्प्रूव डोमेस्टिक एंड फूड हाइजीन। Without an adequate supply of clean water close of their homes, it is extremely difficult to promote personal and domestic hygiene. Simply hygiene measures like hand washing with soap before preparing food, before eating, before feeding a child, after defecation, after cleaning a child who has defecated, and other disposing of child stool should be promoted. All families should have a clean and functioning latrine. The latrine should be kept clean and regular washing of dirty surface. If there is no latrine, family members should defecate at distance from the house, path or areas where children play, at least 10 meters away from the water supply source. It should be recognized that in many communities, young children are often permitted to defecate indiscriminately because diarrhea attack rates are higher among children. It is the defecation in the age group that deserve the most attention. Contaminated foods of all sorts have been identified as major vehicle for the transmission of fecal pathogens during early infancy. Example, diluted milk, cereal, gruels, etc. Delays in consumption add the problem. और क्या देनी है? हेल्थ एजुकेशन देनी है। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर ये है सारे, ये सैनिटेशन हुआ, हेल्थ एजुकेशन हुआ। हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन measures require education support to ensure their proper use and maintenance of such facilities. An important part of health worker job is it to help prevent diarrhea by convincing and helping community members to adopt the maintain certain preventive practice such as breastfeeding, improved weaning, clean drinking water, used to plenty of water for hygiene, used to latrine, proper disposal of stool of young children, etc. Immunization against measles,
is a potential intervention for diarrhea control when administered. मीजल्स का टीका कब लगाते हैं पता होगा 9 मंथ में. when administered at the recommended age, the measles vaccine can prevent up to 25% of diarrheal death in children under 5 year age. इसमें कौन सा रोटावायरस वैक्सीन 2 live oral attenuated rotavirus vaccine were licensed in 2006. The monovalent human rotavirus vaccine Rotavirix DM and the pentavalent bovine human resortant vaccine Rotatechnician TM. वैक्सीन के नाम याद रखने हैं. The Rotatechnician vaccine is administered orally in a 2-dose schedule to infant approximately 2 to 4 months of age. The first dose can already administered at the age of 6 weeks and this should be given no later than at the age of 12 months. The interval between the 2 doses should be at least 4 weeks. The 2-dose schedule should be completed by the age 16 week at later than by 24 week of age. For Rotatechnician TM vaccine, a recommended schedule in 3 oral dose at age of 2, 4 and 6 months. The first dose should be administered between age 6 to 12 and subsequent dosage interval of 4 to 10 weeks. Vaccination should not be initiated for infant age 12 weeks से कम है. All 3 doses should be administered before the age of 32 weeks. Fly control जो काफी important है. Flies breeding association with human or animal feces should be controlled. और diarrheal disease control program चल रहा है. The diarrheal disease control program was started in 1978. याद रखना है ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था. With the objective of reducing the mortality and morbidity due to diarrheal disease since 1985-1986 with the inception of the National Oral Rehydration Therapy Program. The focus of activities have been strengthening case management of diarrhea for children under the age of 5 years and improving maternal knowledge related use to how available food and use of ORS content feeding. तो ये सारा कुछ तुम्हें याद रखना है. ये डायरिया कंप्लीट हो गया आज. कौन से अब इसका समरी देखते हैं अपन. मेन डायरिया क्या है, इसके क्लिनिकल टाइप कितने हैं, इसके इन्फेक्शन एजेंट कौन से हैं, वायरस कौन से हैं, बैक्टीरिया कौन से हैं, अदर सोर्स कौन से हैं, और उसके बाद इसका कंट्रोल के लिए इसमें ओआरएस थेरेपी क्या है, और इसका इंट्रावेनस फ्लूइड क्या है, रिंगोलिटिड का क्या यूज है. उसके बाद अपने प्रिवेंटिव मेजर देखने हैं जिसमें मैटरनल हेल्थ है, चाइल्ड का स्वास्थ्य है, ठीक है, और रोटावायरस वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, और ये प्रोग्राम है नेशनल कंट्रोल डायरियल डिसीज. ये सारा कुछ आपके अगर थोड़ा थोड़ा भी याद रखते हो तो आराम से लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. अब ये डायरिया. इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कोलेरा. आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू.